Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope so you all are fine and you are enjoying your break. As you know that almost 1 month has passed since your holidays, so now it's time for you to move towards your studies a bit seriously, and now kindly pay attention towards your work. Keep a balance between your work and your studies and do your work neatly and cleanly whenever I send you the lecture. This is your SST class. I'm your SST teacher, Miss Nabila Imtiaz. It's our lecture number 7 today. So kindly open the copies, draw the margin lines, prepare the header and start writing. Okay student, you know that from last 2 lectures we are doing the conflict based question. The concept of conflict is going on. So it's the last question of this concept, which is write few ways to resolve conflicts. Okay, you might remember that I have given you the task to think that either there is any solution to the conflict. If there is a situation of conflict, can we solve it out, or it will remain be with the people in the society? No. Keep this fact in mind in your whole life that every problem has a solution. हर मसले का हल होता है. It is our will. ये हमारी सोच है और हमारी will है, हमारी नीयत है कि हम उसको हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. Okay? तो today you have to write down a heading of ways to resolve conflict. I have made this question more colorful for you. It's totally up to you which sort of diagram you want to make, but the work should be neat and clean. आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड. नहीं बनाना चाहते तभी वेल एंड गुड, बट द वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके, योर फर्स्ट वे, या जो आपका पहला तरीका है जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, इज़ टॉकिंग और लिसनिंग. टॉक मतलब बात करना एंड लिसनिंग मतलब दूसरे की बात सुनना. ओके, इन द बबल फॉर्म इन द क्लाउड आई हैव रिटन द हेडिंग एंड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट हेडिंग. Okay, talk and listen to understand each other's feeling instead of making yourself angry or instead of thinking bad about other. You should talk and listen to the second person's feeling. जिस बंदे के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आया वो इस बारे में क्या सोचता है, जिससे आपकी लड़ाई हुई है उसकी इस बारे में क्या थिंकिंग है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं. व्हेन यू थिंक अबाउट दैट थिंग एंड यू टॉक टू हिम, आप उससे बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मसला हल हो जाता है. ओके, द सेकेंड हेडिंग इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग. कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है थोड़ा सा झुक जाना, दूसरे की बात मान लेना. गिव अप अ लिटल टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट मेक्स एवरीवन हैप्पी. यस, बजाय इसके कि आप लड़ाई को लंबा करें, थोड़ा सा खामोश हो जाएं, आप पीछे हट जाएं, अगले को मौका दे दें, तो इससे भी क्या होगा कि जो अगला बंदा है उसके दिल में आपकी जगह भी बढ़ जाएगी और मसला भी हल हो जाएगा. ओके, द थर्ड थिंग इज़ अपोलोजाइजिंग. अपोलोजाइज करना यानी कि किसी से सॉरी कहना, माजरत करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उससे सॉरी करना. ठीक है, से सॉरी to heal hurt feelings and make things better. When you will say sorry, automatically the second person will also give you the chance to resolve the conflict. Number 4 is finding solutions. मसले का हल तलाश करना. Work together, मिल के काम करें, to come up with creative solutions. जब आप मिल के बैठेंगे, बात करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, तो आपको खुद ब खुद रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे कि कैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ओके, द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज सीकिंग अडल्ट हेल्प. अडल्ट मीन एनी पर्सन हु इज़ एल्डर देन यू. आपसे जो बंदा भी बड़ा होता है वो अडल्ट होता है. ओके, आस्क ग्रोन अप्स, अपने से बड़ों से पूछे हैं, जैसे योर पेरेंट्स, जैसे आपके वालिदैन, योर टीचर्स, आपके टीचर्स, फॉर असिस्टेंस, ताकि वो मसला हल करने में आपकी मदद करें, आपको असिस्ट करें. ठीक है, एज़ यू नो डैट द ग्रोन अप पीपल, जो लोग हमसे बड़े होते हैं उनका तजर्बा ज़्यादा होता है. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट एट होम, तो आप अपने अम्मी अबू से ये बात डिस्कस कर सकते हैं, वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे. अगर आप
स्कूल में कोई किसी के साथ खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो यू कैन आस्क टूवर्ड्स योर टीचर्स कि ये हमारा मसला हो गया है, इसको सॉल्व करें. तो डेफिनेटली ग्रोन अप्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. Okay, that's end for today's lecture. But today I am giving you an assignment or an activity that you have to perform. These are basically 3 questions that I am giving you for homework, and it is given on your book page number 14. You will do these homework, these questions on your loose sheets, and you will give me the picture of that राइटिंग होमवर्क. ये जो काम मैंने आपको 5 सॉल्यूशंस बताए हैं ये तो आपने करने ही हैं, बट यू हैव टू राइट डाउन दीज 3 क्वेश्चन इन अ शॉर्ट फॉर्म एंड देन यू हैव टू गिव मी द आंसर. द फर्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लिक्ट यू एवर हैड. यस, आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट किया या आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई तो वो क्या था. ठीक है, यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश एंड जस्ट इन 2 or 3 लाइन्स. द सेकेंड थिंग इज हु इज़ बीइंग हर्ट बाय डैट कॉन्फ्लिक्ट. जब लड़ाई होती है या आपकी जब किसी के साथ वो जो वाक़या है लड़ाई हुई उसमें किसको ज़्यादा मसला हुआ, किसको ज़्यादा, कौन ज़्यादा हर्ट हुआ. अब ये हर्ट आपका फीलिंग वाला हर्ट भी हो सकता है और दूसरा हर्ट भी हो सकता है. एंड द लास्ट थिंग इज़ हु हेल्प्ड यू. किसने आपकी मदद की टू रिजॉल्व डैट कॉन्फ्लिक्ट. उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म जब आपने किया तो उसमें किसने आपकी मदद की. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क. आपने इसको लूज शीट पे करके मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है और जिसका इंसिडेंट सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े का होगा उसका काम मैं ग्रुप में शेयर करूँगी और साथ उसको मैं अप्रिशिएट भी करूँगी. ओके, दैट्स एंड फॉर टुडेज़ लेक्चर. नो नीड टू गिव द कन्फ्यूजन. जो पहला आपका लेक्चर था वो आपकी कॉपी पे जाएगा जहाँ पे एसएसटी का काम जा रहा है एंड दिस होमवर्क एक्टिविटी विल बी डन ऑन योर लूज शीट्स. ओके जी, दैट्स एंड फॉर टुडेज़ लेक्चर. Hope to see you again. It's end of the lecture. Stay blessed and have a nice day. Allah Hafiz.